अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में जॉन कीट्स के बारे में पढ़ेंगे। जॉन कीट्स पैदा हुए थे 1795 में और इनकी डेथ हुई थी 1821 में। इंग्लिश रोमन पोइट थे और रोमांटिक पोइट माने जाते हैं सेकंड जनरेशन के। और शैली और बायरन के साथ काफ़ी बड़ा मकाम है इनका इंग्लिश पोइट्री में। मूरगेट लंदन में ये पैदा हुए थे। मेडिकल स्टूडेंट थे गाइस हॉस्पिटल में। अपनी पहली पोइम लिखी एन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर 1814 में और इंस्पायर्ड थे ली हंट और बायरन से। 1816 में ली हंट एग्री हुए इनकी जो सोनेट थी सॉलिट्यूड को पब्लिश करने में अपनी मैगजीन द एग्जामिनर में। इनके जो फ्रेंड थे चार्ल्स काउडर क्लार्क डिस्क्राइब इस डे ऑफ पब्लिकेशन, इसका जो दिल था वो रेड लेटर डे करार देते हैं। जितने भी जॉन कीट्स के वर्क हैं वो इसकी ज़िंदगी के आखिरी 5 साल में लिखे और पब्लिश किए गए हैं। द थ्री यंग पोइट्स ये कोलैबोरेटिव वर्क है शैले कीट्स रेनॉल्ड का और ये पब्लिश किया हंट ने। ऑन फर्स्ट लुकिंग एट चैपमैन ह्यूमर ये एक सोनेट है जॉन कीट्स का और इन्होंने टोटल 64 सोनेट्स लिखे। जॉन कीट्स हेलेनिक स्पिरिट की वजह से काफ़ी मशहूर हैं। ब्यूटी इज़ ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, दैट इज़ ऑल जी न्यू ऑन अर्थ, ऑल जी नीड टू नो, ये भी बड़ी फेमस लाइन है। और ये होड ऑन क्रिश्चियन आर्म में आती है। ट्यूबरक्लोसिस इनकी डेथ हुई और इनकी टॉम स्टोन पे लिखा गया हियर लाइज वन हुज नेम वाज रिट इन वाटर। शैले ने कीट्स की मौत के ऊपर एडोनिस एलेजी लिखी है। साल 1819 का एनस मिरेबलस कहा जाता है क्योंकि इस साल में इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट पोइम्स को लिखा था। फैनी ब्राउन की मोहब्बत में गिरफ़्तार हुए लेकिन उसने इसकी मोहब्बत को रिस्पॉन्ड नहीं किया। कॉकनी पोइट्स में से एक ये माने जाते हैं। मैथ्यू आर्नल्ड जॉन कीट्स के बारे में कहते हैं Keats is enchantingly and abundantly sensuous. He is more sensuous than other because he satisfied not one or two but all the 5 senses. In a letter entitled On Axiom and Surprise, a poetry letter to John Taylor, इस लेटर में जॉन कीट्स ने लिखा I think poetry should surprise by a fine excess and not by singularity. It should strike the reader as a wording of his own highest thought and appear almost as a remembrance. Major works का अगर हम जिक्र करें Ode on Melancholy or to Nightingale or to Psyche, Ode on a Grecian Earth or to Autumn or to Indolence. O Solitude in Damien 1818 में ये पोएम आई। द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, ला बेल्डेम, सेंस मर्सी, लामिया एजाबेला, लाइफ लेटर एंड लिटरेरी रिमेन्स ऑफ जॉन कीट्स 1848, किंग स्टीफन अ ड्रामेटिक फ्रेगमेंट 1819, ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर ये सोनेट है। हैपेरियन एंड अदर पोएम 1820 में आया। ब्राइट स्टार वुड आई वर्थ स्टेड फास्ट एट द वार्ड। इंडेमियन का अगर हम जिक्र करें तो ये फर्स्ट लॉन्ग पोएम है कीट्स की। ग्रीक मिथ ऑफ इंडेमियन, अ शेफर्ड बॉय बाय द मून, लव्ड बाय द मून गॉडेस सेलिन। इंडेमियन एक शेफर्ड बॉय था और सेलिन मून गॉडेस की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गया। हीरोइक कपलेट में ये पोएम लिखी गई है। कीट कॉल्ड दिस पोएम अ टेस्ट, अ ट्रायल ऑफ हिज पावर ऑफ इमेजिनेशन एंड हिज इन्वेंशन। पोएम जो है डेडिकेट की गई है टॉमस चैटरटन को। पोएम वाज अटैक बाय क्वार्टरली रिव्यू एंड ब्लैकवुड मैगजीन। ओपनिंग लाइन इसकी बहुत मशहूर है, आई थिंक ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, और 4000 लाइन्स है। कीट्स मशहूर है हेलेनिक स्पिरिट की वजह से। नेगेटिव कैपेबिलिटी का जिक्र करें तो ये कंसेप्ट 1817 में इन्होंने दिया। इन नेगेटिव कैपेबिलिटी को ये डिस्क्राइब करते हैं व्हेन अ पोएम मैन इज़ केपेबल ऑफ बीइंग इन अनसर्टेनिटी मिस्ट्रीज डाउट विदाउट एनी irritable reaching after fact and reason. He stated that great poets should have willingness to remain in doubt or not to resolve conflict or ambiguities. Some uncertainties were best left open to imagination and that the element of doubt and ambiguity added romanticism. कीट्स बिलीव करते थे शेक्सपियर के पास नेगेटिव कैपेबिलिटी थी। नेगेटिव कैपेबिलिटी इज़ अ कंसेप्ट इन विच ऑथर poet has to leave his origin and enter in his work as behaving as a character of it. He has not to think what he is, he has to empathize the characters. Egotistical sublime
ये भी एक फ्रेज़ थी जॉन कीट्स ने अपने लेटर रिचर्ड वुडहाउस को जो लिखा था उसमें डिस्क्राइब किया हिज वर्जन ऑफ वर्ड्सवर्थ डिस्टिंक्टिव जीनियस लाइक हिज aloofness, his matter of factness, his austerity, and his self concern. Keats defended his own poetic identity as a chameleon poet in a direct contrast to Wordsworth, whom he characterizes as a monumental and fixed. और टू नाइटिंगेल का अगर जिक्र करें तो 1819 में ये कंपोज़ हुई और चार्ल्स ब्राउन के साथ कोलैबोरेशन में इन्होंने लिखी और ही रोट अबाउट दिस कंपोजिशन एज इन द स्प्रिंग ऑफ 1890 a nightingale has built a nest near my house. Keats felt a continuous joy in her nightingale song. One morning he took his chair from the breakfast table to a grass plot under a plum tree where he sat for 3 hours. In that time he wrote about the nightingale what he perceived on piece of papers. Surrounded by nightingale song, the speaker realizes that the idea of death seems richer than ever and he longs to seize upon the midnight with no pain. By the end of poem, poet realizes that Nightingale is immortal. In this poem, Song of Nightingale is a symbol of art that outlasts mortal life. It is a poem that describes poet Keats' journey into negative capability. A contrast is shown in the poem between the immortal song of Nightingale and the mortal man. Keats called the Nightingale as the light-winged nymph of the tree. नेक्स्ट अगर हम जिक्र करें और टू ऑटम की, कीट्स recorded his love of beauty and love of nature in this poem. Opening line, season of mist and mellow fruitfulness, close boss a friend of maturing sun. Poem gives a beautiful description about autumn season where autumn is described as a season of mellow fruitfulness. Autumn जो है season है ripening of grapes, apples और hazelnuts. Ode on a Grecian heart. Thou still unravished bride of quietness, thou foster child of silence and slow time. His imagination is fired by the perfect beauty of Greek sculpture, and other famous light-hearted melodies are sweet, but those unheard are sweeter, therefore ye sweet pipes play on. एंडिंग लाइन इसकी बड़ी मशहूर है, when old age shall this regeneration was waste, thou shalt remain in miles of other woe. Eve of Saint Agnes का जिक्र करें तो his sensuousness is revealed in this poem through picturing of undressing of a woman. Anew his heart reveals her whisper done of all its wreath pearls, her hair she frees, unclips her warm jewels one by one, loosen her fragrant bodies by degrees. Keats thinks that the highest truth can only be realized through the enjoyment of senses. It is a poem of 42 stanzas written in Spenserian stanza rhyming A, B, A, B, B, C, B, C, C. Title comes from Feast of Saint Agnes. The eve falls on 20th January and the feast day is 21st January. Like Romeo, Juliet, Madeline and Porphyro in this poem also belong to hostile families. The poem ends with a note of triumph of lovers. हाइपेरियन ये इनकम्प्लीट एपिक पोएम है कीट्स की. ये स्टोरी बयान करती है डिस्पेयर ऑफ टाइटन्स आफ्टर देयर फॉल टू द ओलंपियंस. ही लेफ्ट दिस पोएम इनकम्प्लीट बिकॉज इट वाज कैरेक्टराइज्ड ऑफ बीइंग मिल्टॉनिक. इट एग्जिस्ट इन 2 वर्जन बट बोथ आर इनकम्प्लीट. द मेन थीम इज द वॉर बिटवीन टाइटस एंड लेटर ओलंपियन. द हाइपेरियन, द ओल्ड सन गॉड, इज dethroned by Apollo. On first looking into Chapman humor, ये सोनेट 1816 में लिखा गया और he was overwhelmed when going through the translation of Chapman Homer Iliad. This poem is Petrarchan sonnet divided into octave and assisted with rhyme scheme A B B A B B A C D C D C D. Chameleon poet letter to Richard Woodhouse 1818. Keats wrote the letter to Richard Woodhouse on 27 October 1818. Starting line of the letter: My dear Woodhouse, your letter gave me a great satisfaction. Important quote. What shocks the virtuous philosopher delights the chameleon poets. A poet is the most unpoetical of anything in existence because he has no identity. तो ये थी एक छोटी सी इंट्रोडक्शन जॉन कीट्स की और ये इनकी डेथ हुई थी 1821 में.